मैथ्स ले छोड़े क्या आपको? Okay, we'll start with the lecture. Edwin, just put a message in the unofficial group that please join for the lecture, COA lecture. Okay. Yes, sir. So in the last class, we have seen the pin diagram of AD86. So I'll quickly search the diagram for it. Is it visible? Is my screen visible to you? Is it visible? Yeah. So in the last class, we have seen the working of the different pin diagrams. So we have seen first one is called as a power supply pin. So in power supply pin, we have how many pins? 3, which are ground, VCC, and another VCC, right? 2 ground and 1 VCC, right? Yes, sir. Yeah. So that is called as a power supply. After that power supply, we have something which is called as a clock pins. Clock pins, we have something called as CLK. We have something called as a ready, and we have something called as reset. Okay. So clock will make sure कि आपका जो clock input है वो आपके processor को दिया जाए, जिससे कि आपका processor जो है it will work according to the clock pulse which is received from a circuit called as 8284, okay, which is a clock circuit, okay, which works at a frequency 8086 work at a frequency of 5 megahertz, but the clock generate a frequency of 15 megahertz. It divides by 3 and keep the 5 megahertz with it, and those 5 megahertz का आपका processor work करता है, okay. Then we have something called as a ready pin. Ready pin will make sure कि आपका जो भी system है वो सारे के सारे system is working at a very constant pace, and अगर कोई भी data read करना है या write करना है, so आपके सारा का सारा processor जो है it is in ready, so that it can just transfer the data at a single go, and so that it is also ready to accept the data at a single go. So it is just to ensure that a proper synchronization is being maintained. Then we have something called as a reset pin. In reset pin, what we do in order to reset the complete processor, we just pass a 4 clock pulse onto the reset pin. Passing of the 4 clock pulse will ensure that all the data which is there in the register, all the flags that we have, it will completely get reset. Okay, so that is the functionality of the reset pin. Is that clear? Is it clear? Yes, sir. So that we have covered. After that, we have covered multiplex pins. Okay, so we have how many multiplex pins? We have 21 multiplex pins. 21, no? 21 or 20? 21. 21 multiplex pin. 21 multiplex pin. Out of 21 multiplex pin, AD0 to AD15, we have 16 multiplex pin where address and data are multiplexed together. From where to where? From AD0 to AD15. 15, not 16, 15, because starting from 0. Okay, so we have total 16 pins dedicated for address as well and dedicated for data, but data is covered because data ka size is 16 bit. In 8086 the size of the data bus is 16 bit. Okay, so that is being covered, but address ka size is 20 bit, so we still have got 4 bit of address. So that 4 bit of address is multiplexed together with the status signal. Okay, so A16 to S3, A16 and S3 to A19 to S6 is multiplexed together. Okay, so A16 is multiplexed with S3, A17 is multiplexed with S4, A18 is multiplexed with S5, and A19 is multiplexed with S6. Okay, so that is how it is being multiplexed. यहाँ पे पता नहीं कोई diagram गलत है. I'll just go and see हर जगह data है क्या? हाँ नहीं, this is perfect diagram. So if you look closely, AD वहाँ पे क्या था? AD15 के बाद AD16, AD17, AD15, D is always till 15. Okay, उसके आगे का part is from, उसके आगे सिर्फ और सिर्फ एड्रेस रहेगा, डेटा नहीं रहेगा. इज दैट क्लियर? ये मैंने शायद लास्ट टाइम बताया था आपको. Are you guys understood? Have you guys understood what I'm trying to say? So AD15 तक रहेगा, उसके बाद A16 चालू हो जाएगा, A17, A18, A19, and along with that we have S3, S4, S5 and S6, which are the status flag, and finally we have something which is called as a BHE bar, and we have something called as S7. Okay, so ये हमारा multiplex pins है. I've explained all the working of the pins. Did I explain all the working of the pins? No, sir. मतलब BHE बार तक बता दिया था मैं. Okay. Yes, sir. Okay.
So BHE bar is bus high enable. Bus high enable will make sure कि uh, this bus high just a second. Yeah. So BHE bar will make sure कि आपका जो डेटा है वो ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं. Okay. So if you make BHE bar as bus high enable, if you make it as it is actually low signal. What is the meaning of it? If you pass 0 to it, it will get activated. Okay. So if you pass 0 to it, bus high enable, अगर आप वहाँ पे 0 पास करोगे, it will ensure that you're allowing the data to flow. Okay. So data को अगर आपको allow करना है तो bus high enable को आपको 0 करना पड़ेगा. If you don't want allow the data to come into the processor to go outside the processor, in that case BHE bar को आपको क्या करना पड़ेगा? 1 करना पड़ेगा. So it is kind of you're locking the data within the processor. सो इट इज काइंड ऑफ अ डोर. अगर वो डोर ओपन कर दोगे तो आप क्या करोगे? डेटा को अलाउ करोगे अंदर आने के लिए भी और बाहर जाने के लिए भी. If you close the door, you won't allow the data to enter into the processor or leave out of the processor. Is that clear? So that is the role of BHE bar. Is it clear? Yes, sir. Yes. S7 is a status flag which is reserved for future purposes. उसका भी कोई current use नहीं है. Okay, it was meant to be used in future, but in future 8086 was overtaken by 186, then 80186 और 80286 आ गया, 386 आ गया, then we have Pentium 2, Pentium 3. So ये धीरे धीरे evolve होता चला गया processor, and S7 का कोई proper definition नहीं दिया गया है, but still it was reserved for some other practices. Okay. Fine, is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Next is just write down the function of individual pins. Okay, यहाँ तक तो सब common pins है. Okay, just write down the individual pin. हाँ, there is another group of pins जो आप लिख सकते हो. That is called as the interrupt pin. Interrupt pin. Just write down interrupt pin. So we have got two set of interrupt pin. One is called as the NMI and other is called as INTR. We have got two sets of interrupt pin. One is called as NMI and other is called as INTR. So what is NMI and INTR? These are the two interrupt pin. NMI stand for non-maskable interrupt. NMI stand for non-maskable interrupt. And INTR is an interrupt pin. Okay. So one is a non-maskable, other is a maskable interrupt. Okay. What is the meaning? Non-maskable interrupt का मतलब अगर interrupt occur होता है इस pin से. Okay. Are you able to view my cursor? Where is it present? Yes, sir. Yeah. So if you pass input on NMI, NMI पे अगर कोई इंटरप्ट अगर आप पास करते हो उसको आप हाइड नहीं कर सकते. यू कैन नॉट हाइड NMI. ओके. सो उसको आपको सर्विस देना ही पड़ेगा. यू कैन नॉट गिव प्रायोरिटी टू इट इज द मैक्सिमम प्रायोरिटी ऑफ इंटरप्ट. उसको आपको देना ही पड़ेगा. ओके. एंड अगर आप इंटरप्ट INTR पे अगर कोई इनपुट देते हो तो उसको आप एनेबल और डिसेबल कर सकते हो. INTR वाले पिन को आप एनेबल और डिसेबल कर सकते हो. डू यू गाइस रिमेंबर देयर आर टू वेज ऑफ एनेबलिंग एंड डिसेबलिंग इंटरप्ट. One is a hardware way and the other one is a software way. In software we use flag. Okay, we have a flag for interrupt flag. If interrupt flag is made as enabled, अगर interrupt flag को अगर आपने 1 कर दिया तो you are allowing the interrupt. If you are making interrupt flag as 0, in that case INTR पे अगर आप कोई भी interrupt पास करोगे कोई भी उसका response नहीं मिलेगा. Exactly. Is that clear? Yes, sir. What is the hardware way of controlling? Hardware में कौन सा पिन आपको यूज करना पड़ेगा in order to control that? Which is the pin which controls it? It is among the status flag. Status flag में कौन सा status आप यूज करोगे in order to control it? S3 S4 किस लिए यूज करते हैं? S3 and S4 किस लिए यूज करते हैं? Any idea? सर मेमोरी बराबर टू एक्सेस मेमोरी सेगमेंट के लिए ना. या सो अगर मुझे मेमोरी सेगमेंट को सिलेक्ट करना है, वेदर इट इज कोड सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट या डेटा सेगमेंट, जो भी सिलेक्ट करना है, आई कैन सेलेक्ट इट विद द हेल्प ऑफ S3 एंड S4. सो आई हैव मेड अ ट्रुथ टेबल आउट ऑफ इट. उस ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंगली जो भी आप इनपुट दोगे S3 और S4 को, द रिस्पेक्टिव सेगमेंट ऑफ द मेमोरी इज बीइंग सेलेक्टेड, वो आप S3 और S4 से करोगे.
व्हाट अबाउट S5 एंड S6? S5 और S6 से क्या होता है? S5 से क्या होता है फर्स्ट में? इंटरप्ट फ्लैग का मतलब कंडीशन। हाँ, सो बेसिकली अगर इंटरप्ट फ्लैग जो आपका है, ओके, व्हिच इज INTR, ओके, इफ देयर इज अ इंटरप्ट दैट यू हैव, अगर आपने which what is the role of S6? Can someone tell me what is the role of S6? तो बस बताता है क्या? हम्म 8086 में मतलब जीरो, उसमें स्टार्ट जीरो होगा तो फिर वो बस होगा, उसमें ऑन होगा या 8086 में। हम्म सो अगर आप बस जो है, अगर आपका वो एक्टिव रहेगा तो उसके लिए आपको S3 को जीरो करना, सॉरी इनएक्टिव रहेगा तो जीरो करना पड़ेगा, और उस बस को अगर आपको एक्टिव करना है तो उसको आपको 1 करना पड़ेगा। S5 जो है, इट इज अ हार्डवेयर कंट्रोल ऑफ द इंटरप्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? अगर मेरा एक इंटरप्ट है, ओके, इफ देयर इज एन इंटरप्ट व्हिच इज कमिंग, एंड उस इंटरप्ट को अगर मेरे को ऑन करना ऑफ करना, जरा टू वेज, ओके, और ये किस इंटरप्ट की बात कर रहा हूँ? अगर वो NMI से आता है तो मैं उसको कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता, उसको मुझे सर्विस देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर INTR के थ्रू अगर इंटरप्ट आ रहा है, so there are two ways of controlling it. One of the way is through the flag register that we have, and second way is through S5. Okay, so अगर आप S5 पे if you make it as a 1, in that case interrupt will be made as a service. Interrupt को service देना पड़ेगा। और S5 पे अगर आपने 0 कर दिया, in that case it is completely disabled. अगर यहाँ पे कोई भी interrupt अगर आपका आता है INTR पे, you are not bound to give the response to that interrupt. Is that clear? Is that clear? यस सर। Okay, so that is the different multiplex pins that we have. उसके अलावा NMI and INTR interrupt pin है। NMI is a non-maskable interrupt. Non-maskable interrupt का मतलब which cannot be masked or which cannot be hidden. Okay, it अगर वहाँ पे interrupt आया तो it is required to be serviced. If NMI पे अगर interrupt आया तो मुझे service देना ही पड़ेगा, और INTR पे अगर service आया तो I can mask that interrupt. INTR पे अगर interrupt आया तो I can mask the interrupt. If the interrupt is enabled, then only the service will be provided to the interrupt. If interrupt is disabled, then the interrupt will be disabled. You cannot provide the service to that interrupt. Is that clear? यस सर। Okay. Next is we have something called as minimum and maximum pin, MN/MX bar. Okay. So what is MN/MX bar is? What is MN/MX bar is? So we have MN/MX bar. Okay, what is the meaning? It shows whether your processor works in which mode. If I make MN as 1, it will work in which mode? It will work in which mode? मैक्सिमम। MN is 1. MN is 1. That means which will active? Which will be active? MN, which is minimum, right? It will work in minimum mode. What is the meaning of minimum mode? Do you guys remember it? If this is my processor, it will work standalone. It will not require some other processor along with it. Yani 8086 is the only processor जहाँ as a processor work करेगा. Okay. If I make MN/MX bar, if I make it as 0, so क्या करेगा? 0 से क्या करेगा? मिनिमम को डिसेबल कर देगा. बट MX पे 0 आते ही क्या हो जाएगा? 0 का बार is 1. So which mode will get activated? It will activate which mode? Are you guys getting it? Maximum. Are you guys having any doubt? Not able to understand it? Bounce जाएगा. Okay, fine. So I'll just explain. Okay, minimum mode और 8086 जो है आपका, it is a processor. ये तो clear है आप सबको? कितने बिट का प्रोसेसर है? 16 बिट का प्रोसेसर है. ओके, इसके अंदर ये प्रोसेसर का मतलब क्या है? ये आपके डेटा को या आपके प्रोग्राम को रन करेगा और डेटा को इनपुट लेगा और आउटपुट देगा आपको. दैट इज द रोल ऑफ एनी प्रोसेसर, राइट? It will execute the program on the basis of the input that you get, and it will generate the respective output, right? Right? Yes, sir. Any processor can work in two modes. या तो वो खुद काम करेगा या तो किसी प्रोसेसर के साथ मिलके काम करेगा. Okay, is that clear? Is the word clear to you? If it works standalone, it means अगर वो अकेला काम करेगा, it means it is working in minimum mode. Okay, what is the meaning of minimum mode? If it is the only processor in that operation, अगर वो अकेला ही प्रोसेसर है पूरे के पूरे ऑपरेशन में, that means the processor is working in which mode?
minimum mode. Is that clear? Along with this processor, if you have some other processors such as 8087, you have some other processors such as 8089, okay, ये दो प्रोसेसर है, साथ में 8086 भी है. अगर ये तीनों मिलकर के अगर आपका ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, okay, if all these three processors will work together in order to perform any operation, then the 8086 has to work in maximum mode. Is it clear? Yes, sir. The meaning of the minimum and maximum mode is if the processor is working standalone, in that case it is working as a minimum mode. So we need to decide, हमें decide करना है हमें प्रोसेसर को किस मोड में रन करना है. मैं चाहूँ तो उसको मिनिमम में भी चला सकता हूँ, मैं चाहूँ तो उसको मैक्सिमम में भी चला सकता हूँ. अगर मेरे को मिनिमम में चलाना है तो मुझे mn/mx बार इस पिन पे क्या डालना पड़ेगा? अगर मुझे मिनिमम में चलाना है तो इस पिन पे क्या रखना पड़ेगा? Can you guys tell me? What input should I pass on to this pin जिससे कि मेरा 8086 has to work in minimum mode? क्या input देना पड़ेगा? 1. So if I pass 1, 8086 is the only processor which will work in the operation. कोई भी ऑपरेशन में 8086 ही प्रोसेसर आपको मिलेगा. लेकिन अगर mn/mx बार को मैंने अगर 0 कर दिया, इस पिन पे अगर मैंने 0 पास कर दिया, in that case the 8086 will work in maximum mode. In maximum mode, it is not the only processor which is working. It has to work along with some other processor. उसको और भी प्रोसेसर के साथ काम करना पड़ेगा. Is that clear? Is that clear? Yes, sir. So Yes, sir. yeah, so it is a very big topic actually. Minimum mode and maximum mode is a very big topic, but it is removed. Unfortunately, it is removed from your syllabus. Okay. If I am able to show it, there is a huge circuit diagram which is there, and it will take approximately close to 4, 5, 6 lecture at least. Okay. Minimum mode. Of 8086. ओके और ये हर साल पेपर में आता है, हर साल पेपर में आता है. इट कम्स एवरी टाइम इन पेपर, but this has been removed from the syllabus. Okay, I don't know how stupid they have designed the syllabus. I don't, by the way, my lecture is getting recorded, but yeah, I have to give a rant to them seriously. मतलब ऐसा ही होगा अभी, मतलब it will go मतलब बाउंसर ही जाएगा, because I need to cover अभी तक हम लोग सेकंड मॉड्यूल में चल रहे हैं. We have to cover थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, कितना मॉड्यूल बचा हुआ है और ये लग भी नहीं रहा है मुझे ये वीक में खत्म भी होगा. So this is the complete diagram of the minimum mode. Okay, what is the meaning of the minimum mode? Only this processor will work. Only 8086 will work. In case of maximum mode, we'll have some other processor along with it. So साथ में 8087 एक और chip यहाँ पे होगा और उस केस पे it will work as a maximum mode. Okay, is that clear? अभी ये टॉपिक में समझाने जाऊँगा तो it will take very big topics. So we'll quickly go to the. हाँ, yes. Okay. Any just yeah go ahead ask it out. सर इसका इनपुट कहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है? 0 and 1 ऐसा इनपुट कहाँ एक्सेप्ट कर रहा है? हाँ, so अगर आप इस डायग्राम में देखोगे, there is mn/mx bar is there mn/mx bar. इस डायग्राम में तो नहीं दिख रहा मुझे, but we have to make sure just स्टार्ट में था शायद. एक मिनट, कहीं ना कहीं तो होगा, कोई ना कोई डायग्राम में होगा. इसमें है, इस डायग्राम में है. If you look closely over here, यहाँ पे mn/mx बार को इसने क्या दिया है? VCC यानी लॉजिक 1 दिया. लॉजिक 1 देते ही मतलब क्या हो गया? क्या एक्टिव हो जाएगा? 8086 will work in which mode? Minimum. So this is the representation. अगर कई बार ये डायग्राम आपको बनाने के लिए बोलते हैं और ये डायग्राम में अगर ये पिन पे अगर आपने गलती कर दिया या ये पिन पे अगर आपने मेंशन नहीं किया, इसका मतलब आपने एक्सप्लेन ही नहीं किया आप मिनिमम मोड का डायग्राम बना रहे हो या मैक्सिमम मोड का डायग्राम बना रहे हो. Okay, so this particular pin is very important, and I've said also कि 8284 करके एक IC है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो 8284, जो कि आपके क्लॉक को इनपुट देता है. ओके, एंड इट वर्क्स एट अ 15 मेगाहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी पे. सो ये 3 पिन को इनपुट देगा, क्लॉक को देगा, रीसेट को देगा और रेडी को देगा. क्लॉक को क्यों देगा, कितने फ्रीक्वेंसी पे देगा? 5 मेगाहर्ट्ज पे देगा. और अगर आप क्लॉक को दोगे तो 8086 विल वर्क एट अ 5 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे. रीसेट पे अगर आपने इस 8284 से 4 पल्स अगर आपने रीसेट पे दे दिया तो 8086 क्या हो जाएगा? इट विल गो इनटू द रीसेट मोड. एंड रेडी से अगर आपने इनपुट दिया, इट विल एंश्योर कि 8086 इज नाउ रेडी एंड इट कैन ट्रांसमिट द डेटा और इट कैन रिसीव द डेटा इन अ सिंगल गो. सो these are the pins for your clock pins. Is that clear? Yes sir. Yes. NMI और INTR देख रहे हो आप यहाँ पे, ये दो इंटरप्ट पिन है.
NMI स्टैंड फॉर नॉन मास्केबल इंटरप्ट। यहाँ पे आप इंटरप्ट दोगे तो उसको आपको सर्विस करना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी चॉइस। बट इन केस ऑफ INTR यू हैव वेरी मच चॉइस। उसको आप सॉफ्टवेयर से भी एनेबल कर सकते हो, उसको आप हार्डवेयर से भी एनेबल या डिसेबल कर सकते हो। सॉफ्टवेयर से एनेबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा कौन से फ्लैग को, एनेबल करने के लिए सेट करना पड़ेगा कौन से फ्लैग को, इंटरप्ट फ्लैग को, IF को। और अगर आपको क्लियर करना है तो आपको क्लियर करना पड़ेगा इंटरप्ट फ्लैग को। और अगर आपको हार्डवेयर के थ्रू अगर आपको इसको एनेबल और डिसेबल करना है इस पर्टिकुलर पिन को, तो आपको S5 को 0 से आप इस पर्टिकुलर पिन को डिसेबल कर सकते हो और S5 से आप इस पिन को एनेबल कर सकते हो। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yeah, so these are the pins, this is how it works। और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो AD0 to AD15, okay? यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो तो 8282 is nothing but it is a latch, okay? ये latch है अभी, ये this will take very big topic, I don't want to go into that detail। बताऊं आगे का सिलेबस छूटेगा चलेगा, क्या करना है? मन तो कर रहा है सर। But I'm so interested in explaining this topic, but yeah, I'm very much bound to the syllabus actually। कल को ऐसा नहीं होना चाहिए बाद में बोलोगे सर ने पहले ही 2 मॉड्यूल सिखा के छोड़ दिया। Okay, so सर आप आगे प्रोसीड करो। yeah, I'll go to the next topic, that would be better, वरना फिर आप अटक जाओगे unnecessary इस चीज में। लेकिन 8086 बिना मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड के नहीं समझ में आएगा। ओके, दो आई विल एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ दिस पिंस, बट वो मतलब ही नहीं आएगा जब तक वो डायग्राम आप नहीं समझोगे। फाइन, सो विल गो टू द MN/MX बार इज दिस पिन। यहाँ पे बार को इसने स्टार से इंडिकेट किया, यू बेटर रिप्रेजेंट विद द बार। ओके, सो MN/MX बार पे अगर आपने 1 पास किया, दिस 8086 विल इज द ओनली प्रोसेसर जो कि ऑपरेशन के दौरान प्रेजेंट रहेगा। MX/MX बार पे MN/MX बार पे अगर आपने 0 पास किया, in that case along with 8086 will have some other processors। okay, so MN का पे अगर आपने 1 पास किया, it will work in minimum mode। MN/MX बार पे अगर आपने 0 पास किया, it will work in maximum mode। is that clear? Yes, is sir. that clear? Yes. Then we have something called as RD bar pin। RD bar pin का मतलब क्या होता है? Any guess? RD stand for So read. read। okay, so अगर आपको read करना है, if the processor wants to read the data, okay, so in that case आपको it is RD bar। इस पिन पे क्या डालना पड़ेगा? it is active low signal। active low का मतलब it will get activated when the signal is low। यानी क्या करना पड़ेगा अगर आपको read करना है तो what you have to pass over here? you have to pass 0 over here। if you don't want to read the data, in that case you need to pass 1। so if you don't want to read the data, you just pass 1 over here, you won't be able to read the data। if you want to read the data, you just pass 0 over here and you are able to read the data। who is able to read the data? The processor is able to read the data। is that clear? is that clear? Yes. Yes, sir. after that we have got two set of 31 से लेके आप 24 से लेके 31 तक अगर आप देखोगे, so we have two set of functionality। okay, अगर आपने MN/MX बार को okay, MN/MX बार को अगर आपने 1 पास किया, मतलब क्या हो जाएगा? it will work in which mode? Minimum. minimum mode। in case of minimum mode, ये वाला पिंस दिख रहा है आपको, HOLD, HLDA, WR बार, M/IO बार, DT/R बार, DEN बार, ALE बार, INTA बार, ये सब दिख रहा है आपको। Yes, sir. Yes. Yes. in that case the role of 24 से 31 वाला, this will be followed by this pin। okay, so अगर आपने मिनिमम मोड को एक्टिवेट किया तो इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, एड्रेस लैच इनेबल, डेटा इनेबल, ये वाला पिंस एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपने मैक्सिमम मोड में अगर उसको एक्टिवेट किया तो दिस सेट ऑफ पिंस विल गेट एक्टिवेटेड। आर यू गाइस गेटिंग इट? Yes, sir. so Yes, it sir. depends which mode you are selecting in। okay, I'll go back to the again this diagram। this is the minimum mode का diagram। okay, minimum mode diagram में अगर आप देखोगे, you have INTA bar, okay, which is interrupt acknowledgement। you have M/IO bar, which is memory input output। we have RD bar, we have WR bar, which is write bar। we have data enable, we have data transmit and receive। okay, यही सब पिन आपको यहाँ पे दिख रही है। okay, you can see over here WR bar, M/IO bar, DTR bar, DEN bar, ALE bar, INTA bar, बराबर ना? बराबर। so in case of HOLDA, HLDA, in case of if you have activated in the minimum mode, these pins will get activated। okay, in case of maximum mode, these set of pins will get activated। is it clear? is that clear? is that clear?
Yes, Yes, sir. sir. Yeah. So what are the pins that we have in case of minimum mode? So I'll quickly go in the case of minimum mode. In case of minimum mode, okay, what are the pins that I have? From 24 we have interrupt acknowledgement. Pin number 24 we have INTA bar. Pin number 25 we have ALE, which stand for address latch enable. We have 26 number pe we have DN bar. DN bar stand for data enable. 27 pe we have DT slash R bar, data transmit or receive, DT slash R bar. Then at 28 we have memory slash IO bar. Okay. At 29 we have something called as WR bar. At 30 we have something called as HOLD, hold, you know, HLDA, sorry. It is HLDA. And at 31 we have something called as hold. Is that clear? So if you activate minimum slash maximum bar, अगर आप MS/MX bar को अगर आपने यहाँ पे 1 pass किया, the role of the pin from 24 to 31 will be these roles. And if you make MS/MX bar, if you make it as 0, in that case it will be acting as a maximum mode. It will go into the maximum mode. And in that case, the pins, pin का role जो होगा 24 will act as a QS1, 25 will act as a QS0, 26 will act as a S0 bar, 27 will act as S1 bar, 28 will act as S2 bar. Okay, 29 will act as a lock. Yeah, 29 will act as a lock. Okay, 30 will work as a request slash grant 0. 31 will act as a request slash grant 1. Okay, is that clear? So what is the meaning? एक ही set of pins है, लेकिन उनका role अलग अलग है. It depends on whether you're working in minimum mode or you're working in maximum mode. Is that clear? Yes, sir. Yeah. Now we'll understand what is the meaning of all these pins. Okay. INTA, the full form of INTA, just keep on writing it down. INTA stands for interrupt acknowledgement. What is the meaning of it? What is the meaning of it? Interrupt acknowledgement का मतलब है या नहीं वो बताता हूँ. अगर इंटरप्ट आया और उस इंटरप्ट को अगर आपको सर्विस प्रोवाइड करना है, तो in that case the processor will give acknowledgement. Yes, I have received the interrupt. Okay, so it informs whoever is transmitting the interrupt. It will inform that thing. Okay, I have received your interrupt. Wait for a minute. I am processing your request. Okay, so interrupt acknowledgement is kind of, it gives you an information कि interrupt उसके पास receive हुआ है कि नहीं. Receive होते ही वो acknowledgement दे देगा. Okay, so अगर ये मेरा प्रोसेसर है, इंटरप्ट अंदर आ रहा है, INTR comes inside, इंटरप्ट अंदर आया, कहाँ पे आया? 8086 में. एक्नॉलेजमेंट क्या होगा? बाहर जाएगा या अंदर आएगा? एक्नॉलेजमेंट देगा कौन? प्रोसेसर बोलेगा ना मेरे को इंटरप्ट आया. सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द एक्नॉलेजमेंट? कैन यू टेल मी? आउटसाइड और इनसाइड? नहीं समझ में आया? आई विल रिपीट अगेन. इफ दिस इज योर प्रोसेसर, इफ यू वांट टू गिव इंटरप्ट, इंटरप्ट कौन देगा? कोई एक्सटर्नल इवेंट देगा, जैसे आप कंप्यूटर में यूएसबी डालते हो, राइट? सो दैट इज एन इंटरप्ट दैट इज हैपनिंग, राइट? सो आप इनपुट देते हो, यू गिव एन इंटरप्ट टू द प्रोसेसर, प्रोसेसर को आप इंटरप्ट देते हो. आपको प्रोसेसर को बताना है कि मुझे इंटरप्ट मिल गया, तो सिग्नल कैसे दोगे आप? विल इट बी आउटसाइड और इट विल बी इनसाइड? किसको बताना है आपको? बाहर वाले को बताना है. सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द एक्नॉलेजमेंट? कैन यू टेल मी द डायरेक्शन ऑफ द एक्नॉलेजमेंट? विल इट बी आउटसाइड और इनसाइड? इट हैज टू बी आउटसाइड, राइट? मुझे उस बंदे को बताना है कि यार मेरा तेरा यूएसबी तूने कनेक्ट किया, मुझे पता चल गया, राइट? Right, so processor will inform the other system, yes, I have received your interrupt, please wait for a minute, I'm processing your request. Okay, so in case of interrupt acknowledgement, the direction of the message will be from the processor to the system who is requesting from the interrupt. Is that clear? Is that clear? Yes, sir. Yes, So if sir. you look closely over here, this diagram, okay,
इंटरप्ट अगर आप देखोगे तो वो विद इन द प्रोसेसर आ रहा है, इट इज कमिंग इनटू द प्रोसेसर. INTA बार जो है इट इज गोइंग आउटसाइड द प्रोसेसर. आर यू गाइस गेटिंग इट? Are you guys getting it? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So interrupt acknowledgement, you just need to explain what is INTA bar. What is the explanation for this? If interrupt acknowledgement pin pay, if you get 0, that means you have received the interrupt. If you get 1, that means you have not received the interrupt. Why? Because it is active low signal. Active low का मतलब it will get activated when the signal is low. And जब भी इंटरप्ट अगर आपको आया और वो अगर आपको एक्नॉलेज करना है in order to explain that you have received the interrupt, in that case the processor will pass 0 over there. Are you guys getting it? 0 आते ही क्या मतलब होगा? That means you have received the interrupt. अगर 1 आया तो क्या होगा? That means you have not received the interrupt. Is that clear? Yes, sir. So please write down what is INTA. INTA bar. INTA bar stands for interrupt acknowledgement. If 0 is present on pin number 24, it suggests the processor has received the interrupt. If 1 is present at pin number 24, that means the processor have not received the interrupt. Is that clear? Yes, sir. Yes. Okay. The next is something called as address latch enable. Pin number 25, ALE. ALE stands for address latch enable. Okay. So what is the meaning of address latch enable? अगर आपको याद होगा AD0 से लेके AD15 तक क्या होता है, हमारा मल्टीप्लेक्स पिन होता है, राइट? और उसके बाद A16 से लेके A19 तक दिस इज मल्टीप्लेक्स विद S3 to S6 बराबर बराबर. Yes, sir. So that means the same set of pins is carrying address also, the same set of pins is carrying data also. Address latch enable will ensure whether you're carrying the address or you're carrying the data. So that means if you want to carry that address latch enable, if you're carrying the address, what should be the content of this pin? 1. 1. And if you're carrying the data, in that case the content of ALE should be 0. 0. Okay, so just write down, if the processor present, if the pin number 25, if it is 1, it suggests that whatever the pin carries is nothing but it is the address. And if at pin number 25 we have 0, so whatever the data or whatever at pin number AD0 to AD15, whatever we pass, that is not your address but it is your data. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. So this is, it gets more clear with this particular diagram. Okay, ये diagram में अगर आप देखोगे, so यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, so we have AD0 to AD15 is multiplexed, then we have A16, S3 to A19 to S6, then we have VHE bar and S11. They all are multiplexed together. और ये black जो आपका broad दिख रहा है arrow, that is nothing but it is a bus, right? Right? Yes, sir. Yes, So sir. अगर आप इस पे अगर आपको एड्रेस लेना है, ओके, सो दिस इज नथिंग बट दिस इज अ लैच. ओके, ये लैच पे अगर आप यहाँ पे राइट साइड में देख पा रहे हो, इफ देयर इज अ एड्रेस व्हिच इज कमिंग, ओके, अगर एड्रेस आ रहा है तो ये वाले सर्किट को 8282 को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा. और नीचे 8286 पे आपका डेटा आता है. ओके, ऊपर वाले सर्किट पे आपका एड्रेस आएगा, नीचे वाले सर्किट पे आपका डेटा आएगा. तो दैट मीन्स ये बस पे जो भी आ रहा है, अगर एड्रेस होगा तो ये वाले सर्किट को एक्टिवेट करना पड़ेगा, अगर डेटा आ रहा है तो ये वाले सर्किट को एक्टिवेट करना पड़ेगा. इफ यू लुक क्लोजली, यहाँ पे एक STB करके पिन है. There is a pin called as STB, okay, which is a part of 8282. STB is nothing but it is a strobe. Okay, strobe का मतलब क्या है? It is kind of a door. Okay, if you make that, if you open that door, okay, if you open that door, the address will come into 8282. If you close that door, no address or no data will go into 8282. So let's say अगर मेरा एड्रेस आ रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उस स्ट्रोब को ओपन करना पड़ेगा या क्लोज करना पड़ेगा? डोर को ओपन करना है या क्लोज करना है? If my address, I have to open it. In order to open it, अगर आप देख रहे हो स्ट्रोब को कंट्रोल कौन कर रहा है? ALE कंट्रोल कर रहा है. If I make the content of ALE as 1, that means the door will also get open. And यहाँ पे जो भी आएगा इस पिन पे, which we are assuming that it is address, the address will go into 8282. Are you guys getting it? Are you guys getting it? Yes, sir. If ALE is 0, that means the data is coming. ALE 0 होते ही ये क्या करेगा? स्ट्रोब को भी क्या कर देगा? It will make strobe as 0. ALE को ALE 0 है तो स्ट्रोब भी 0 हो जाएगा. स्ट्रोब 0 होते ही क्या हो जाएगा? अब इसके अंदर आप कुछ भी डाल नहीं सकते.
So that means whatever is coming on the this bus is not the address, because अगर address होता तो आप इसको open करते. If you're closing it, that means whatever this bus carry, it is not your address, but it is data. Are you guys getting it? Are you guys getting it? Yes, sir. So the role of ALE is clear to you. अगर मैं ALE पे 1 pass करूंगा, that means it is a address. If I'm passing 0, in that case it is data. If it is 1, in that case it will activate 8282. Okay, don't go into that detail because 8282 को explain करने के लिए और फिर time जाएगा आपका. But I'm just trying to explain this particular thing because pin diagram बिना इस circuit के मुझे नहीं लगता ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको. This circuit is very much important, but they have removed completely from the syllabus, and it was ensured कि आप ये इसमें time पढ़ाने में आप time waste मत करो. लेकिन समझाएंगे कैसे आप? That is a major concern. ठीक है, okay. So अगर is the role of ALE clear to you? Is the role of ALE clear to you? Yes, sir. If I pass, सर yes. ALE का हाँ सर वही पॉइंट आप रिपीट कीजिए. Sorry. हाँ सर वो रिपीट कर दीजिए 1 और 0 पे क्या Okay. ऐसा मतलब. Yeah. So if I pass ALE पे 1, if I pass ALE पे 1, आप मुझे बताओ STP का क्या कंटेंट हो जाएगा? ये 1 यहाँ से जाएगा वायर पे बैठते हुए, STP भी 1 बन जाएगा आपका, स्ट्रोब भी 1 बन जाएगा आपका. यस सर. स्ट्रोब 1 बनते ही क्या हो जाएगा? डोर ओपन हो जाएगा किसका? 8282 का. यानी जो भी इस बस पे आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, इस पर्टिकुलर लैच के अंदर आ जाएगा. लैच के अंदर आते ही क्या हो जाएगा? आउटपुट में क्या मिल जाएगा आपको? एड्रेस. दैट मींस what we are assuming ALE is 1, that means whatever is coming from these pins, ये multiplex pin पे जो भी आ रहा है, that is nothing but your address which is coming. Okay, so if ALE is 1, that means whatever is coming from all these pins, it is nothing but the address. If ALE is 0, strobe will become 0 and it will disable this particular whole circuit. 8282 को disable कर देगा. That means you cannot generate address out of it. इसका मतलब बस पे क्या होगा? Data होगा. Are you guys getting it? Yes sir. I'll repeat again. If you want to repeat me in proper language, just write down. If the content of ALE is 1, it means the address is there in the system bus. If ALE is 0, that means instead of address, we have data in the system bus. Okay. Just like ALE, we have something called as DEN. Okay. DEN का मतलब होता है data enable. Okay. Data enable का मतलब it is again a pin which control this 8286. 8286 क्या है? It is a trans receiver. What is the meaning of trans receiver? It will transmit the data also. It will receive the data. अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, address is just one way. It gives the address. Who gives the address? The processor gives the address. But अगर आप data देख रहे हो, data क्या है यहाँ पे? बाई डायरेक्शनल है. बाई डायरेक्शनल मतलब प्रोसेसर के अंदर डेटा आ भी सकता है, प्रोसेसर से डेटा जा भी सकता है. आर यू गाइस गेटिंग इट? Yes, sir. Yeah. So this 8286, it is nothing but it is a trans receiver circuit. इस सर्किट को अगर आपको एक्टिवेट करना है, there is a pin called as OE which stand for output enable. और इस output enable को कंट्रोल कौन कर रहा है? Data enable. And data enable is a bar which means it is a active low signal. Active low signal का मतलब क्या है? अगर ये 0 होगा, that means it is getting activated. उस केस में ये बस जो है, it is assuming that data is coming now. If it is 1, sorry, if it is 0, it is assuming data is coming and it will transmit that data. समझ में आया? Yes, sir. और अगर आप रिसीव कर रहे हो, उस केस में भी आपको डेटा एनेबल को क्या करना पड़ेगा? 0 ही करना पड़ेगा. वॉट एवर इज द डेटा कमिंग फ्रॉम द मेमोरी, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएगा, इस बस पे बैठ करके प्रोसेसर के अंदर चला जाएगा. So DEN bar is nothing but it is a pin which works exactly like ALE. ALE decide in order to activate 8282, which is a latch which ensures that address is gone into that latch. Similarly, DEN also enables 8286 and it ensures that 8286 is activated, and so that your data is transmitted or received. So in order to activate that, in order to receive the data, you have to make the content of, in order to transmit or receive the data, you have to make the content of DEN bar as 0. DEN bar को अगर आप 0 करते हो तो क्या हो जाएगा? डेटा ट्रांसमिट हो सकता है या रिसीव हो सकता है. DEN bar को अगर आपने 1 कर दिया, you cannot transmit or receive the data. Are you guys getting it? Yes, Is that sir. clear? Fine. Yes, sir. Then we have something called as DT/R bar. DT/R bar का मतलब whether you're acting as a data transmitter or you're acting as a receiver. Who is acting like that? 8286. आपको बताना है कि 8286 work कैसे कर रहा है. Is it acting as a transmitter? Transmitter का मतलब in that case data will go into the processor or go outside the processor. Transmit में outside the processor जाएगा या inside the processor आएगा data?
Outside. outside. So data will move from the processor, it will move into the memory. So अगर आप dt slash r bar पे अगर आप 1 पास करते हो, okay, then यहाँ पे अगर आप पिन देख रहे हो, there is a pin called as t, it will act as a transmitter. If you pass 1 at dt slash r bar, it will make this pin t pin को ये 1 बना देगा, और t pin का मतलब होता है ट्रांसमीटर. then 8286 will work as a transmitter. So आपका जो डेटा होगा वो प्रोसेसर से होते हुए मेमोरी में चले जाएगा. Are you guys getting it? और अगर dt slash r bar को अगर आपने 0 कर दिया, तो it will act as a, this 8286 will act as a receiver. So it will receive the data from the memory, it will receive the data from the memory, and through the bus it will come into the processor. और ये बस के थ्रू, ये बस पे बैठ के आपके D0 से D15 पे आपके जितने भी पिंस थे उससे आपका डेटा आ जाएगा विद इन द प्रोसेसर, प्रोसेसर के अंदर आ जाएगा. Is that clear? Yes, sir. So the role of dt slash r bar is it controls whether you are transmitting the data or you are receiving the data. If you've made dt slash r bar as 0, in that case you will receive the data. If you have made dt slash r bar as 1, in that case you will be transmitting the data from the processor. Is that clear? Yes, sir. Yes, Okay, sir. we'll see. Yeah, we'll see over here. So yeah, den का मतलब क्या है? Data enable का मतलब den bar के को अगर मैंने 0 कर दिया, so what will happen? What will happen? Data is enabled. Okay, so that means you're transmitting the data, or you're receiving the data. That means your 8286, okay, which is your trans receiver, that circuit will get activated. If you make this dn bar as 1, that trans receiver circuit will get deactivated. That means neither you can transmit the data nor you can receive the data. Is that clear? Yes, sir. If you make dt slash r bar as 0, that means your trans receiver will act as a receiver. It will act as a receiver. Okay, that means your processor will receive the data. If you make this dt slash r bar as 1, in that case it will act as a transmitter. So your processor will transmit the data to the memory. Okay, in this case the data will be transmitted to the memory. In this case, from the memory the data is received into the processor. Is that clear? Yes, sir. Okay. Then we have something called as m slash io bar, we have something called as wr bar. Okay, so these are your control signals. Okay, we'll just go to this particular diagram. Okay, if you look closely, we have got 3 control signal. One is something called as m slash io bar, we have rd bar, we have wr bar. Okay, m is nothing but memory, io is nothing but input output. Okay, if you remember the diagram, this is your processor, this is your memory, this is your IO devices, right? Do you guys remember this diagram? Yes, sir. So the processor can transmit the data or can receive the data from the memory. It can get the access or it can transmit the data or receive the data from input output devices. यानी मुझे क्या करना पड़, मेरे पास 4 ऑपरेशन है. I can read from memory. Okay, I can read from memory. और I can also write into the memory, right? मैं कर सकता हूँ ये मेमोरी के अंदर, क्या मैं रीड और राइट कर सकता हूँ? Yes, sir. The processor can do read into the memory, it can read the data into the memory, or it can write into the memory. The processor can read from input output devices से भी read कर सकता है, और क्या वो write भी कर सकता है input output devices में? Yes, very much. अगर आप diagram देख पा रहे हो तो. So these are the 4 control signals which are generally used by a processor. So similarly, 8086 also has the same 4 control signals, and it generates with the help of these 3 pins. ये 3 pin के मदद से ये 4 control signal generate करेगा. Okay, so we have something called as a 3:8 decoder. Okay, 3:8 decoder का मतलब क्या होगा? 3 इनपुट लेगा और 8 आउटपुट देगा आपको. Okay, बाकी 4 relevant नहीं है, बाकी 4 इतने important नहीं है. Okay, so उसमें से 4 control signals क्या generate करेगा? If you look closely, we have something called as IO bar. What is IO bar? Stand for input output read. What is IOW? Input output write. What is MEMR? Memory read. What is MEMW? It is memory write. So अगर आपको input output से read करना है तो आपको ये वाले signal को 0 करना पड़ेगा, because all these are active low signal. IOW बार को अगर आपको आपने इसको 0 कर दिया, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? इनपुट आउटपुट राइट कर रहे हो. MEMR पे अगर आपको 0 मिला, इसका मतलब आप मेमोरी रीड कर रहे हो. MEMW पे अगर आपको 0 मिला, इसका मतलब आप मेमोरी राइट कर रहे हो. अगर किसी पे भी 0 आया, आप वो ऑपरेशन करने वाले हो, आपका प्रोसेसर वो वाला ऑपरेशन करने वाला है. इज दैट क्लियर? एंड हु डिसाइड्स दैट? These signals decide that. So if I make the content of m/io bar, अगर मैंने m को
1 कर दिया, m/io bar पे अगर मैंने 1 पास किया, व्हाट ऑपरेशन आई एम परफॉर्मिंग, वेदर आई एम परफॉर्मिंग ऑन मेमोरी और आई एम परफॉर्मिंग ऑन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, किस पे कर रहा हूं मैं? इफ आई पास 1 ओवर हियर, मेमोरी मेमोरी, ओके। आरटी बार पे अगर मैंने 0 पास किया तो क्या करूंगा मैं? रीड करूंगा या राइट करूंगा? रीड रीड करूंगा। डब्ल्यू आर पे अगर मैंने 0 पास किया तो क्या करूंगा मैं? राइट राइट। सो लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे पास किया 101, व्हाट इज द ऑपरेशन दैट आई एम परफॉर्मिंग? 101 मैंने पास किया था, 101 memory read it is memory 101, it is memory read. So memory read वाला कौन सा ऑप्शन है? This is this signal which will get activated. If I pass, let's say 110, मेमोरी राइट memory right. If I pass 001, 001, memory input output memory read 001. If I pass 0 over here, if I pass 0 over here, if I pass 1 over here, what I'll be able to do? IO read It is IO IO read. Why IO read? Because IO bar पे अगर आप 0 पास करोगे, IO will get activated. Okay, that means I'm performing input output operation. उसका RD बार पे अगर आपने 0 पास किया मतलब आप IO read करोगे. So IO read के लिए this signal will be activated. Okay, if I pass 010, what will happen? 010 IO right. So ये सारे जो 4 कंट्रोल सिग्नल्स हैं इसको आप एक्टिवेट कर सकते हो by just passing the respective signals over here. So अगर आप 0 पास करोगे तो it will perform input output, अगर यहाँ पे आप 1 पास करोगे it will perform memory operations. If you pass 0 over here it will perform the read operation. If you pass 1 over here it will perform nothing. Okay, it will perform no read operation. If you pass 0 over here, in this case it will perform the write operation. If you pass 1 over here it will perform no write operation. Is that clear? Is that clear? yes sir Yes, sir. So I'll just go to that particular thing. So m/io bar, if I pass 1 over here, operation will be performed on what? Memory or input output devices? It will perform on memory memory. memory Okay, if I pass 0, in that case it will be performing operation on IO input output devices. Is that clear? If WR bar के content को if I make it as a 1, will I be able to perform write operation or no write operation? No right operation. No write operation. If I make it as 0, in that case I can perform write operation, depending whether I'm performing on memory or I'm performing on IO. और RD बार तो दोनों में यूज होता है, मिनिमम और मैक्सिमम मोड में, तो वो बाहर में है. इफ यू गाइस लुक ओवर हियर, RD बार जो है इट इज देयर which is a common for both minimum and maximum mode. Is that clear? Yes, sir. yes sir Fine. Then we have something called as एक दो पिन बच गए. One is hold and HLD. Okay, it is very important thing. There is a concept of direct memory access. Okay. Yeah. So in module number 6, on module number 6, there is a concept of memory. IO devices. In that case, we have a concept which is called as a direct memory controller, DMC. Okay. DMC is not DMA. Basically, it is DMA, direct memory access. And direct memory access के लिए we have something called as a DMAC, which is direct memory access controller. Okay, what it is? If this is your processor, which is 8086, if this is your input output devices, and if this is your memory that you have. Okay, हम लोग हर टाइम क्या करते हैं? Via processor you perform the operation, right? Via processor. अगर मेरे को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कोई भी ऑपरेशन करना है, जो कि जैसे अगर आपको कोई मूवी प्ले करना है तो पहले आप मेमोरी प्रोसेसर को बोलोगे, प्रोसेसर जाएगा वहाँ पे ढूंढेगा मेमोरी में, वहाँ पे उसको मूवी मिलेगी, वो ला करके वापस इनपुट आउटपुट को देगा. सो बेसिकली ऑल द ऑपरेशन व्हिच इज हैपनिंग, इट इज हैपनिंग वाया द प्रोसेसर, right? Everybody agrees? yes sir If you want to bypass this processor, okay, if you want to bypass this processor, you can very much do it. आप वो कर सकते हो. Okay, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो सिस्टम बस है ना, इसको हाईजैक करना पड़ेगा. You want to hijack the system bus. Okay, so input output device can hijack this system bus by using another component called as DMAC. DMAC क्या करेगा? It is called as a direct memory access controller. तो DMAC क्या करेगा? It is kind of a terrorist. Let's assume it is kind of a terrorist. So जैसे वो प्लेन हाईजैक करते हैं, ये क्या करेगा? इट विल हाईजैक द सिस्टम बस. ओके, ये अपने पास ये सिस्टम बस को ले लेगा. ओके, अब क्या करेगा? डायरेक्टली आप इनपुट आउटपुट से डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस कर सकते हो. बट दिस इज जनरली यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग, अगर आपको हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर करना है सर. ओके, हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर करना है, ओनली इन दैट केस वी यूज दिस ऑपरेशन.
Okay, is that clear? Yes, sir. So DMAC क्या करेगा? It will take this system bus, okay, and it will become new bus master. ये क्या बन जाएगा? Bus master बन जाएगा. So in order to get this bus master, in order to get that bus master, there is a signal called as HOLD. Okay, hold करके एक signal है. Okay, so ये क्या करेगा? The processor, if this is a processor that we have, processor will receive hold signal. What is the meaning? It means that DMAC is asking for the system bus. It is asking to please, not please, but मेरे को तेरा system bus चाहिए. Okay, it is asking to surrender the system bus. Okay, so 8086 will surrender itself by receiving a signal called as HLDA, which is hold acknowledgement. It will receive the acknowledgement and it will say please take it. और लेकिन जब आपका काम हो जाएगा मुझे को वापस दे देगा. So it is kind of DMAC will request for hold signal and the processor will release a HLDA, and along with HLDA it will release all its system bus and DMAC will become the new bus master. Is that clear? Is that clear? और animated तरीके से अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो if this is your processor, if this is your 8086, if this is your memory, if this is your IO devices, okay, नेचुरली क्या होता था, IO डिवाइसेस को अगर डेटा ट्रांसफर करना है तो पहले जाएगा प्रोसेसर को, बोलेगा प्लीज मुझे डेटा ला के दो. प्रोसेसर जाएगा मेमोरी से, बोलेगा तेरे पास ये डेटा है क्या. प्रोसेसर बोलेगा हाँ मेरे पास ये डेटा है, तो मेमोरी बोलेगा ठीक है ये डेटा मुझे दे. प्रोसेसर वो डेटा लेगा और वो क्या करेगा, IO डिवाइसेस को डेटा फॉरवर्ड करेगा, राइट. सो इट इज अ वेरी लेंथी प्रोसेस. अगर एक डीमैक होता तो वो क्या करता, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गोइंग टू 8086, डीमैक को बोलता मेरे को ये डेटा चाहिए. डीमैक क्या करेगा, वो पूरा डेटा उठाएगा और सीधा आपको ला के दे देगा. ओके, वन बाइट बाय बाइट नहीं ट्रांसफर होगा, इट विल ट्रांसफर द होल डेटा एट अ वेरी फास्ट पेस. सो जनरली डीमैक जो है आपका डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर जो है वो आप जनरली डेटा ट्रांसफर करने के टाइम पे ही यूज करते हैं. ओके, सो हाउ डू दैट? DMAC को यूज करने के लिए it has to become the bus master. In order to become bus master, DMAC will send a signal to 8086 called as HOLD. Okay, it will point a gun on 8086 and tell me कि please give me your system bus. So 8086 क्या करेगा, वो acknowledgement दे देगा, उसको बोलेगा ठीक है तू ले ले, लेकिन तेरा काम होते ही मुझे वापस दे देना. Okay, so on receiving the acknowledgement, the DMAC will become your new bus master. This system bus will get deactivated and this system bus will get activated. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so that is the role of HOLD and HLDA. So if I make HOLD as 1, that means the bus master is no longer your 8086. You can say there is a request which is being received by the 8086 for transferring of its system bus. Is that clear? Is that clear? Yes, sir. If it is 0, that means there is no such request which is being asked from 8086. That means 8086 is the only bus master और उसके पास सारे के सारे सिस्टम बस है. HLDA पे अगर 1 आएगा इसका मतलब the bus master has, or the role of the bus master has been transmitted to the DMAC. And if HLDA is 0, that means still 8086 is the bus master. Is that clear? Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, I'll quickly go to this diagram. If you look closely, so HOLD अगर आप देखोगे इसका डायरेक्शन देखो. Okay, HOLD will come from DMAC into the processor. प्रोसेसर के पास आएगा और बोलेगा कि तेरा सिस्टम बस मुझे दे. And HLDA will go outside the processor, stating क्या है कि yes, I have received your request. Kindly take the system bus. I'm deactivating my system bus. Now you are the bus master. So that acknowledgement is given by 8086. So ये अगर आप सिग्नल देखोगे HLDA का, the direction is completely outside. It is coming outside the 8086. Is that clear? Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So all these pins are clear. Then we'll go to time हो चुका है ना, मुझे यार addressing mode भी अच्छा काम करना था. Okay, we'll understand this now, all these at very fast pace. So QS1 and QS0, okay, these are the 2 bits which are generally used to control the 6-byte queue. Do you guys remember the 6-byte queue? Where it is? Yes, sir. Where is it? BIU. Architecture. Yeah, in the architecture, if you look closely in BIU, you have got a 6-byte का queue. If that 6-byte का queue, if you want to access it, okay, अगर आपको वो 6 byte के अंदर, okay,
उस 6 बाइट का जो भी आपका ऑप कोड है उसके अंदर बेसिकली इट होल्ड्स द ऑप कोड। उस क्यू को अगर आपको कंप्लीटली उस क्यू पे अगर आपको कोई भी ऑपरेशन करना है, यू कैन डू दैट विद QS0 and QS1. Okay, so you have something called as QS0, we have something called as QS1. So if I make the content of as 0 0 0 1 1 0 and 1 1, okay, note down what will happen, okay, on onto this queues. Okay, ये 6 byte queue पे क्या operation होगा. So if I make it as a 0 0, so basically no operation will happen. तो जैसा queue है वो वैसे ही रहेगा, कोई उस पर कुछ changes नहीं होगा. If I make 0 1, so first byte of opcode is released. Okay, so queue में से जो पहला byte होगा वो रिलीज होगा. कहाँ पे जाएगा? It will go to the decoding part. Do you guys remember? और यहाँ से कहाँ जाता है? Decoding में, control unit में जाता है. Do you guys remember that? Yes, sir. So it will go to the control unit. It will get decoded basically. Okay, it will get completely decoded. If you, in order to perform that decoding, you need to make the content of 0 1. तो 0 1 करोगे तो क्या होगा? एक बाइट डिकोड होगा, अगली बार फिर से अगला बाइट डिकोड होगा, उसके बाद अगला बाइट डिकोड होगा, and so on so forth. Okay, so if you want to decode, you want to make the content of QS1 and QS0 as 0 1. Is that clear? Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. If you make the content of QS1 and QS0 as 1 0, in that case it will empty the whole queue. जो भी आपकी क्यू है जिसके अंदर 6 बाइट का आपका इंस्ट्रक्शन आया हुआ है, उस पूरे इंस्ट्रक्शन को एम्प्टी कर देगा, उसको पूरा ड्रॉप कर देगा. इट विल ड्रॉप द कंप्लीट ऑपकोड व्हिच इज कंप्लीटली फेच. जो फेच हुआ था BIO के अंदर उसको पूरा का पूरा एम्प्टी कर देगा. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Okay, and if you make it as a 1 1, it will drop the instruction and it will insert the next instruction as soon as possible. Next instruction in the next cycle. Okay, so it will not just drop it, but it will, whatever is the next instruction जो उस particular data bus में उसको insert कर देगा. So it will perform the 2 operation at given time. So एक तो drop भी करेगा, साथ में एक नया instruction के अंदर भी उसके अंदर queue के अंदर डाल देगा. Is that clear? Is that clear? Yes, sir. So if you make QS1 and QS0 as 0 0, no operation. If you make it as a 0 1, that means one of the byte will get decoded, one byte will get decoded at a time. Okay, if you make it as a 1 0, all the data, all the instructions that you have in this queue will be flushed out. If you make it as a 1 1, all the data will be flushed out. Along with that, the new set of instruction which was supposed to come, that will be inserted in the queue. Is that clear? Is that clear? Yes, sir. Okay. That is the role of QS1 and QS0. S0, S1 and S2 will basically work like DT/R bar M/IO bar. Okay, अगर आपको याद होगा memory read, memory write, IO read, IO write जिससे हम लोग करते थे, यहाँ पे S0, S1 और S2 ये मिल करके आपका क्या जनरेट करेंगे? This will generate the control signals. Okay, it will generate the control signal in case of maximum mode. Okay, is that clear? Yes, sir. Yes, sir. What are the control signals? I'll be going there shortly, but remember S0, S1, S2 are the 3 signals which will generate the control signals. RQ/GT0 and RQ/GT1. Okay, it stands for request and grant. So it is just like hold and HLDA. Okay, so in case we don't have DMAC, but we have, it is working in 8086 is working in maximum mode. So along with 8086 we can have some other processor. So 8087 भी हो सकता है साथ में, right? Right? Yes, sir. So in this case, let's say this is your memory and this is your IO devices. Okay, so in this case, the bus जो है, bus 8086 के पास ही रहेगा. Okay, because 8086 is the only bus owner. 8087 को अगर ऑपरेशन करना है मेमोरी में, तो उसको क्या करना पड़ेगा? बस लेना पड़ेगा. Because we have just one bus, but we have got 2 different drivers. बराबर ना? Are you guys understanding? 8087 को भी मेमोरी पे ऑपरेशन करना है, बट उसके पास बस नहीं है. There is always a single bus that we have in the system. सिस्टम के पास एक ही बस रहेगा. So 8086 को क्या करना पड़ेगा? अपना बस को ट्रांसफर करना पड़ेगा. किसको? 8087 को, ताकि वो मेमोरी पे ऑपरेशन कर सके, ताकि वो इनपुट आउटपुट पे ऑपरेशन कर सके. Are you guys getting it? Yes, sir. So in order to transfer that 8087 को अगर ऑपरेशन करना है तो it will ask for request. It will ask for request. Okay. So RQ पे क्या करेगा? वो 0 पास करेगा.
and on receiving this request 8086 will give GT पे it will grant. Okay, so अगर ये 0 send करेगा तो 8086 will transmit GT which is 1. It will transmit 1. On receiving this 1, the new bus master will become 8087. 8087 will become the new bus master. Is that clear? Is that clear? Yes. Okay. और अगर request नहीं आ रहा है तो by default 8086 is the bus master. But if there is a request and if there is a grant which has been given, then the new bus master will be the other processor who has requested for the bus services. Is that clear? Is that clear? Yes, sir. Yes. So if you look closely, we have got two pins. One is for request 0 and other is for request 1. Why is it for? Because अगर दो processor अगर आपको side by side connect करना है, so let's say this is 8089 and this is 8087. This is 8086. Okay. ये क्या करेगा? Let's say if it request for RQ0 ये करता है. Okay. It request by default the bus master कौन है? 8086 by default है. Okay. इसने रिक्वेस्ट किया 8086 क्या करेगा? इसको ग्रांट कर देगा. ओके, GT0 पे इसने ग्रांट कर दिया. अब बस मास्टर कौन बन गया? हु इज द बस मास्टर? न्यू बस मास्टर. हु ओन्स द बस राइट नाउ? 8089. ओके, सो इट विल बिकम द न्यू बस मास्टर. सो जितने भी बस है वो कनेक्ट हो जाएंगे 8089 से. सो मेमोरी जो है आपका 8089 से कनेक्ट हो जाएगा. इनपुट आउटपुट जो है वो आपका 8089 से कनेक्ट हो जाएगा. इज दैट क्लियर? Yes. Is that clear? On performing the operation, after performing the operation, it will release back the bus to the 8086. 8086 के पास बस वापस आ चुका है. अब 8087 इसको रिक्वेस्ट करेगा. सो रिक्वेस्ट करेगा RQ1 से. इसने रिक्वेस्ट किया. इसने रिक्वेस्ट करने के बाद क्या होगा? 8086 क्या करेगा? इसको ग्रांट कर देगा with the help of GT1. And now 8087 is become the new bus master. Okay, 8087 will perform its respective operation onto the memory और onto the input output devices. Memory read कर सकता है, memory write कर सकता है, IO read कर सकता है, IO write कर सकता है, based on the data bus which we have. Okay, data bus or the address bus or the control bus, उसको use करके वो अपना काम कर सकता है. After performing its task, it will release all the bus, and now 8086 will become the bus master. Is that clear? Yes, sir. Okay. So if you look closely, अगर ऐसा भी possible है कि 8089 ने पहला request किया या दोनों ने एक साथ request किया. Let's say both have requested at the same time. Who will be given the highest priority? Who has given the who gets the highest priority? Always remember, in case of COA, in case of any logic logic subjects, always the priority is given to 0. After that we give the priority to 1. Okay, so RQ जो भी अगर दोनों simultaneously अगर आप request कर रहे हो, RQ से जो भी processor connected होगा, right now in this case 8089 is connected to that, so 8089 को पहला आप priority दोगे, so it will become the bus master. And in that case 8087 will have to wait for certain time. जैसे इसका काम हो जाएगा, it will release the signal back to 8086. जो भी बस है वो 8086 को रिलीज कर देगा और फिर 8087 क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा और फिर उसको बस वापस उसको दे देगा. Is that clear? Is the priority clear to you? So out of RQ0 and GT0 and RQ1 and GT1 में से दोनों में highest priority is given to this particular pin. So जो processor इस pin से connected होगा उस processor को ज़्यादा priority मिलेगा compared to the other processor which is connected to this particular pin. Is that clear? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay. We'll see about the next. Also S0, S1, S2. Okay. Just write down that it is generating the control signals. Don't go into that detail because again S0, S1, S2 is a big topic. It is a big topic. Okay. So S0, S1, S2 के लिए एक फिर से थोड़ा अच्छा खासा टाइम लगता है. But will not go into that detail because जहाँ तक मुझे लगता है that question which can come in 8086 is all about the pin diagram because that is the only topic which is there. Okay, बाकी minimum mode, maximum mode has been completely removed. So they will be asking the question on this particular thing. Okay, so I'll quickly go to this particular circuit diagram. Yeah, so we have seen all these pins. Then we have something called as test bar. Okay, test bar अगर आप देख पा रहे हो, so test bar is basically used to check whether all the components of your 8086 is working properly or it is not working. So if you pass 1, it will recheck. Okay, it will check all the components are working properly and it will generate 1. Okay, if it is generating 0, इस pin पे अगर 0 आ गया, इसका मतलब some of the component is not working properly. Is that clear? So it is kind of a signal which processor will inform to the user whether the chip is working properly or it is not working. Is that clear? Yes, sir.
Okay, Yes, so sir. that is the complete pin diagram of 8086. I'll repeat तो again. लॉक वाला सर लॉक Okay, लॉक रह गया, हाँ हाँ हाँ, yeah. So लॉक में क्या होता है, yeah. Yeah. If you want to ensure, अगर let's say अगर 8086 में बहुत important आप प्रोग्राम कर रहे हो, you are executing very important program and you want to ensure कि 8087 या 8089 आपको डिस्टर्ब ना करे, ओके, सो आप क्या करोगे, ये रिक्वेस्ट और ये रिक्वेस्ट को आपको ब्लॉक करना होगा. इन ऑर्डर टू डू दैट यू रिलीज अ लॉक. ये लॉक सिग्नल रिलीज होते ही लॉक यहाँ पे भी होगा, लॉक यहाँ पे भी होगा. लॉक पे अगर आपको 0 आ गया, इसका मतलब रिक्वेस्ट इज अलाउड. लॉक पे अगर 1 आ गया, दैट मींस द बस मास्टर विल be solely 8086. Nobody can take or nobody can hijack that bus from 8086. Is that clear? Yes, sir. And it makes lock as 1 when there is a very important program that 8086 is executing. So it don't want to transfer that data bus. वो data bus को अगर transfer कर देगा तो उसका program execution halt हो जाएगा, right? So it don't want to transfer that. वो अपना पूरा का पूरा पहले program execute करेगा, उसके बाद ही वो lock को release करेगा. So lock is kind of, it will ensure कि आपके bus को कोई hijack ना करे. Neither 8087 can ask for that bus, nor 8089 can ask for that bus, because 8086 has locked that system bus and it is the only bus master right now. So in order to ensure that, lock का content आपको 1 करना पड़ेगा. As soon as lock is made as 1, nobody can hijack it. If it is made as 0, they will ask for the request and you have to give the grant to the respective processor who's asking for the request. Is it clear? Is that clear? Yes, sir. So we'll quickly understand all this topic. Okay, so we have something called as a ground. Okay, we have something called as a another ground. We have something called as a VCC. All these are power pins. From we have clock, we have ready, and we have reset. These are called as clock pins. We have INTR and we have NMI, which are called as interrupt pins. From AD0, AD14, AD15 till AD15, we have एड्रेस एंड डेटा मल्टीप्लेक्स टुगेदर. ओके, इस पिन पे अगर आप 1 पास करोगे या 0 पास करोगे, वो एड्रेस भी हो सकता है, डेटा भी हो सकता है. उसको डिसाइड करने के लिए हमारे पास क्या है, ALE है और DN बार है. अगर ALE 1 होगा, दैट मींस इस पिन पे जो भी आ रहा है वो क्या आ रहा है. इफ AD0 से AD15 पे अगर आपका कोई भी कंटेंट है विच इज 1010, कुछ भी अगर आप डाल रहे हो, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अगर ALE पे अगर 1 आ रहा है, दैट मींस उस पिन पे क्या है, एड्रेस. अगर ALE का कंटेंट इज 0, दैट मींस whatever is coming on that pin it is nothing but it is data. Okay, we have something called as DN bar also. DN bar पे भी अगर आपने 0 पास किया, that means the data is coming from this pin, and if DN bar is made as 1, that means the address is coming of the pin. Okay, अगर आप सुन रहे हो, कई बार आपको ऐसा लग रहा है यार ALE अगर बता देता तो DN bar की जरूरत क्यों है, right? This question comes, right? ALE अगर मुझे बता रहा है कि एड्रेस है, तो फिर DN बार की जरूरत क्यों? अगर एड्रेस नहीं तो नेचुरली वो डेटा होगा. बट जरूरत क्यों है? बिकॉज वी आर यूजिंग 2 different circuits. Okay, this point get clear with this particular diagram. In order to control 8282, we have S3 and that is controlled by ALE. In order to control 8286, which is a data transceiver, we have DN bar. Is that clear? So ये सर्किट को एक्टिवेट और इस सर्किट को डीएक्टिवेट करने के लिए हमें 2 अलग-अलग पिन लगानी पड़ेंगे, because we have got 2 different circuits. One circuit is used for storing the address, one circuit is used for storing the data. Is that clear? Yes, sir. Okay, yeah. Next we have something called as S3, S4. These 2 pins are the status pins. These 2 status pins are generally used for identifying which segment you're using, port segment, extra segment, data segment, or कौन सा बच गया, port, extra data and stack segment. Okay, stack segment. S5 is generally used for hardware controlling of the interrupt. X6 is generally used for locking your system bus, whether you're checking your system bus is activated or it is deactivated. A16 to A18, these A19, these are your 4 remaining addresses, because in address we have got 20-bit address which is supported by 8086. VHE bar will ensure कि आपका जो बस है whether it is activated or it is not activated. Okay, and उसके लिए हमारे साथ में we have something called as S7, and this S7 is generally reserved for future purpose. We have got a pin which is called as MN/MX bar. It will ensure whether your 8086 is working in minimum mode or maximum mode. Maximum. If it is working in minimum mode, in that case
pin number 23 to 24 to 31, the role will be HOLD, HLDA, WR bar, M/IO bar, DTR bar, DN bar, ALE bar, INTR bar. These are the roles of these pins. Okay, if it is working in maximum mode, these are the roles of these same pins. Okay, उसी pin का the role will get changed. In case of minimum mode, we'll be having hold, we have HLDA, hold, and HLDA will ensure कि आपका जो सिस्टम बस है उसका मास्टर is direct memory access controller. WR bar, M/IO bar will ensure whether you're performing the memory read or memory write, IO read or IO write. DT/R bar will ensure आप data transmit कर रहे हो या receive कर रहे हो. DN bar will ensure कि आप data enable कर रहे हो या disable कर रहे हो. Address latch enable ensure कर रहे हो आप latch में address enable कर रहे हो या you're not storing the address into the latch. INTA bar will give the acknowledgement to the interrupts, and these interrupts are either it can be non-maskable interrupt or it can be maskable interrupt. Then we have something which is called as request and grant. Request and grant will work as just like HOLD and HLDA. It is generally used for controlling or becoming the bus master. The priority is always given to RQ0 and GT0 first. Okay. Then we have something called as a log bar. If you make the content of log bar as 0, 8086 will lock its bus and no one can get the access to this particular system bus. If log bar ka content is made as 1, it can be asked for the request. Okay, any other processor can ask for the request for the system bus. S0 bar, S1 bar, S2 bar, these are the control signals which is used for generating the control signals such as memory read, input output read, memory write, etc, etc. There are many signals, many control signals which we have in case of maximum mode, but you just need to explain that these are generally used for generating the control signals. Okay, QS0 and QS1 bar, QS0 and QS1 are generally used for controlling the 6-byte queue which we have in case of DIO. If you want to empty it, if you want to perform if you want to decode one byte at a time, in that case you need to change the content of QS1 and QS0. Okay, so depending on what operation you want to perform the 6-byte queue, you can choose the respective input to the QS0 and QS1. Then we have got something called as a test bar, which will ensure whether your 8086 is ready to perform the operation or all the components are working properly. And if it is not working, in that case the test bar will give 1 in that case. Is that clear? Is it working clear to you? Yes, Of all the sir. pins? Anybody has any doubt? Thank you guys. Thank you so much. You can leave. If you don't, if you have any doubt, you can stay behind. Thank you, sir. Yeah. Thank you, sir. Mhm. Thank you. Yeah. Thank you, sir. Bye. Yeah. Bye. सर Yes. सर आपको कल वो विभक्ति ने स्क्रीनशॉट भेजा था, आपने हाँ, देखा नहीं? देखा मैं, लेकिन एक्चुअली कल से इतना काम है ना. Just a second. I'll just stop the recording.